Done. So as I told you, today we'll be doing two sums. One is of pile group. So before moving to pile group, हमने ये देखा कि pile group का efficiency कैसे निकालते हैं. We have seen that part, right? Now we are going to see. I've, I've told you efficiency of your pile group. 1 second. Just a minute, guys. Let me. Okay, done. और सम टेक्निकल एरर. ठीक है, हमने ये देखा कि एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप का जो एफिशिएंसी है इट इज गिवन बाय योर जितना भी लोड तुम्हारा पाइल ग्रुप लेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाइल्स टाइम्स योर एक पाइल कितना लोड लेता है. हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास एक पाइल का ग्रुप है, आई हैव ग्रुप ऑफ पाइल्स, तो उसका एफिशिएंसी कैसे देगा ये हमने देखा भी है. अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इसको कैसे निकालते हैं, this QUG को डिटरमाइन कैसे करते हैं, this we are going to do. So we are going to find group capacity of piles. We are going to find group capacity of piles. We are doing it both the soils. First मैं ले रहा हूं cohesive soil के अंदर. In cohesive soil मैंने वापस आपको बता रहा हूं, cohesive soil माने C है उसके अंदर, phi का वैल्यू इट इज इक्वल टू 0. There is no phi in that. Okay. Now, before moving into this topic, let us understand actually there are two types of failure that can happen in a pile group. दो टाइप के फेलियर हो सकते हैं एक पाइल ग्रुप के अंदर. Which are they? Let's start. 1 second. Let me admit more students. Yeah. One type of, see this failure I can also say the technical term में हम mechanism बोलते हैं. अगर आप ऐसे टू अच्छे से पढ़ी हो, you would be knowing what is mechanism. Mechanism मतलब failure. Okay. Now this mechanism, or failure of pile, it has two modes. One is it can have a individual pile failure. It can have a individual pile failure, or it can have a bulk failure, that is block failure, or it can have a block failure. एक एक करके देखते हैं. मैं ये डायग्राम को इरेज करता हूं यहां से. Let us see the first one. That is what you mean by individual pile failure. Let me write it here. Individual pile failure. Let me draw the piles. 1, 2, 3. As it's a group of pile, I'm having more piles in the group. Okay. अगर मैं इसका एलिवेशन देखूं, सॉरी अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं, ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, ये आपका पाइल का कैप है जो ऊपर का है, और आपके पाइल्स कुछ ऐसे दिखेंगे. अगर आप क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हो ग्राउंड का, दिस आर योर पाइल्स. ऑल राइट. अब इंडिविजुअल पाइल फेलियर में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पाइल फेलियर में क्या हो रहा है, आपका जो फेलियर सरफेस है इट इज अलोंग द इंडिविजुअल पाइल, इट इज अलोंग द इंडिविजुअल पाइल. आपका जो फेलियर सरफेस है या फिर फेलियर प्लेन है वो एक एक पाइल के सराउंडिंग में ही है, एक एक पाइल के सराउंडिंग में ही है. सो इंडिविजुअली हर पाइल फेल हो रहा है.
इंडिविजुअली हर पाइल फेल हो रहा है। अब आप पूछोगे सर पाइल कब फेल होगा? जब सेटलमेंट होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पाइल फेलियर। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंडिविजुअली पाइल फेल हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को, दिस इज माय फेलियर सरफेस व्हिच आई हैव ड्रॉन इन ब्लू कलर, व्हिच आई हैव ड्रॉन इज माय फेलियर सरफेस। इसी चीज को अगर मैं क्रॉस सेक्शन में दिखाने जाऊं, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। मेरा इंडिविजुअली मेरा हर पाइल फेल हो रहा है। सो दिस इज माय failure surface. This is my failure surface. Now, as I've told you, there is again one more type of failure that is called as block failure. अब block failure का मतलब क्या? Let's again draw a pile group. Let's again draw a pile group. Okay, let me draw it in next slide. I'm drawing a pile group, the same number of piles. Okay, I've drawn a pile group. इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू पे देखो तो कैसे दिखेगा? You have a ground surface, you have a ground surface, you have a pile cap, and these are your piles. इस सामने से आपको ऐसे दिखेगा। ओके, I've drawn this. ठीक है, अब क्या हो रहा है? आपका पाइल एक साथ फेल हो रहा है। एक साथ का मतलब, मैं इसका जो फेलियर सरफेस है, it would be along this, it would be along this. This is your failure surface. तो जब भी मैं बोलता हूं कि ब्लॉक फेलियर, this would be your failure surface. Whenever I'm saying a block failure is going to happen in a pile, this is your failure surface. इस failure surface में अगर मैं यहां पे ड्रॉ करने देखो क्रॉस सेक्शन पे, it will look like this. यहां पे आपका failure surface है और यहां पे आपका failure surface है. This is your failure surface. फेलियर सरफेस मतलब जहां से पाइल फेल होने वाला है, यहां से सॉइल जो है शेयर होने वाला है. सो दैट इज योर फेलियर सरफेस. अगेन दिस इज योर फेलियर सरफेस. व्हेनेवर यू आर हैविंग अ ब्लॉक फेलियर, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. वन इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस विड्थ. नाउ दिस इज कॉल्ड एज outer width. So I'm telling B0, which is called as outer width. And also you have to find L0, that is outer length. L0 is outer length. Okay, let's compute this. One is second. If I'm telling this is my spacing between piles, let S be the spacing between piles. Let S be my spacing between piles. Okay, let D be the diameter of the pile. D is my dia of piles. Okay, now so this is my S. If I compute the width of this, so can I write my B0 equal to 2S plus यहाँ का D by 2 और यहाँ का diameter divided by 2. So D by 2 plus D by 2. So in short, I can write my B0 equal to 2S plus D. For this sum, I'm able to compute my B0. In the similar way, for this particular sum, can I compute my L0? This is my spacing between piles, S, और एक पाइल का डायमीटर D है, सेंटर टू सेंटर है, so this would be D by 2, ऊपर का भी रहेगा D by 2. So for this particular example which I have taken, so आपका L0 कितना रहेगा? It is equal to 2S plus D, where S is your spacing and D is your diameter of the pile. Now let's move to, now let's compute your group capacity, that is we are going to find QUG in cohesive soil. अब मैंने जब भी मैं आपको बोलता हूं कि it's a cohesive soil, it means phi equal to 0, and the best example for cohesive soil it would be, it is a clay. Okay, now
हर सॉइल पे अगर आप सैंड पे निकाल रहे हो या फिर क्ले पे निकाल रहे हो, यू हैव टू डू इट 2 टाइम्स. अपने को नहीं पता कि इट्स अ ग्रुप फेलियर और इट्स अ इंडिविजुअल फेलियर. मैं वापस बता रहा हूं आपको. इंडिविजुअल फेलियर मतलब हर पाइल एक एक करके फेल हो रहा है. ब्लॉक फेलियर मतलब एक साथ आपका सारा का सारा पाइल एक साथ फेल हो रहा है या फिर एक साथ सेटल हो रहा है. सो दैट इज योर ब्लॉक फेलियर. तो हर बार अपने को 2 बार करना पड़ेगा. सो फॉर अ क्ले I will do the first time, that is based on individual pile failure, based on individual pile failure. Okay. I have to derive a formula. It's very easy, not a big derivation that we have. So basically, for an individual pile failure, I can write my group capacity as equal to, that is QU is the ultimate load that a group of piles can carry. I means it is an individual pile failure case. It's equal to number of piles multiplied by QU, that is ultimate load capacity of a single pile. So QUGI equal to number of piles multiplied by एक pile कितना load लेगा. So this is the formula. So I'll just write it here. N means number of piles and QU means the ultimate load a single pile can carry. A single pile can carry. ठीक है. अब QU का वैल्यू तुम्हें पता हुआ है. That is the equation number 3 that we have done. So I will write N multiplied by QU का वैल्यू तुम्हें पता हुआ है. That is equation number 3, which is equal to CUB into N into AB plus Cu alpha AS. The same formula which we have written for individual piles. I've just written it here. So this formula which I have written it here, this is the formula for the group capacity of the pile when it is in cohesive soil for an individual pile failure case. Now हम वापस इसको block failure के निकालेंगे. So based on block failure case or block failure mode. Okay, तो इसका मैं नोटेशन कैसे लिख सकता हूँ? I have written here QUGI. I is for individual. I will write here QUGB. B is for block. ठीक है. अब ये कैसे निकलेगा? It's very easy once you understand the things. मैं वापस पाइल का ग्रुप बना देता हूँ आपके लिए. This is my pile group which I am having. अच्छा नीचे का रो नहीं था. I will just erase this one. ठीक है. ब्लॉक फेलियर मतलब ये पूरे के पूरे पाइल्स एक साथ फेल हो रहे. दिस वाज द ब्लॉक फेलियर. हमने ये देखा कि द विड्थ ऑफ द ब्लॉक फेलियर इज गिवन बाय B0, दैट इज द आउटर विड्थ. L0, it is the length, outer length of the block that we are considering. Now in this, the formula changes in this way. Your QUGB, that is group capacity at block failure, is equal to मैं बस थोड़ा ही चेंज कर रहा हूं. CUB N वैसे के वैसे लिखूंगा. जस्ट राइट इट देयर. CUB into N मल्टीप्लाइड बाय यहां पे AB है. AB की जगह पे आई विल राइट AG. AG is my gross area. Gross area कितना रहेगा? My gross area would be equal to B0 into L0. दैट इज जो ब्लॉक जो बनेगा आपका ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया प्लस अगेन मैं कुछ टर्म्स को सेम रख रहा हूं. माई CU आई एम कीपिंग इट एज सेम. सो मल्टीप्लाइड बाय CU मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. AS की जगह पे यू विल हैव वन सेकेंड, जस्ट चेंज द कलर. PG into L. AS की जगह पे you will have PG into L. PG is what? PG is basically the perimeter of it. Perimeter कैसे निकालते हो? It's a rectangle. L0 plus B0 plus B0 plus L0. I can write it as 2 times of B0 plus L0.
इसका पेरीमीटर निकाला मैंने. Perimeter मतलब you're adding all the sides. And L is the length of the pile which is embedded. And one more thing, while having this formula, that you should note that your alpha is equal to 1. Your alpha in this formula, it's equal to 1. Any doubt in this formula you have? Anyone? वापस बोलता हूँ, because don't retro this all formula, so I'm making you to understand how to derive that formula. One thing that you have to understand, जब भी मैं पाइल को ग्रुप में बोलता हूँ ना, दो टाइप के फेलियर हो सकते हैं. एक हो सकता है उस पे इंडिविजुअल फेलियर हो. अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल फेलियर कब होगा और ब्लॉक फेलियर कब होगा. दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो. मैंने आपको बताया कि ये हर एक पाइल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्पेसिंग. तो इंडिविजुअल फेलियर और ब्लॉक फेलियर तब होगा जब आपका स्पेसिंग कम होगा या ज्यादा होगा. जब आपका स्पेसिंग कम होगा तो जरा सोच सकते हो, अगर आप एक एक करके कम स्पेसिंग पे अगर आप कुछ भी पेन रखते हो या फिर कुछ भी रखते हो तो ब्लॉक फेलियर होगा, एक साथ वो सब नीचे की तरफ आएंगे. सो जब भी आपका स्पेसिंग कम है तो पाइल्स विल बिहेव एज अ ब्लॉक एंड इट विल फेल आउट. जबकि अगर स्पेसिंग बहुत दूर दूर है, अगर आपकी स्पेसिंग बहुत दूर दूर है तो एक एक पाइल फेल होगा. सो जब भी आपका स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, द फेलियर दैट यू कैन सी इज इंडिविजुअल फाइल फेलियर. का फोन उठाते हैं, बोलते हैं मैंने फोन उठा लिया. One second. Okay. So when the spacing is large, you will have individual pile failure. Apart from that, we have derived two formulas, and yeah, we have seen this part also. अगर ब्लॉक फेलियर है तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है उसके पेरीमीटर पे. B0 उसका विड्थ है, L0 उसका लेंथ है, S स्पेसिंग है हर पाइल का बिटवीन का, D इसका डायमीटर है. B0 कैसे निकाल सकते हैं, इट इज S प्लस D by 2 प्लस D by 2. L0 कैसे निकाल सकते हैं, इट इज S प्लस S, दैट इज स्पेसिंग प्लस ये जो जगह बचा है उसको मैंने ऐड किया. I got two formulas, that is B0 equal to 2S plus D, L0 equal to 2S plus D. Don't learn this formula. This is very important that you don't learn this formula. ये आपको करना आना चाहिए सम के अंदर. Next one. After this, we have learned that अगर मुझे group capacity निकालना है, when my pile is in groups in a cohesive soil, then I have to consider two conditions. One is मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा इंडिविजुअल फेलियर पे उसका फॉर्मूला क्या है. जब पाइल ग्रुप सॉरी जब पाइल जो है अगर इंडिविजुअली आप रखते हो तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइल्स मल्टीप्लाइड बाय एक पाइल कितना लोड लेगी. तो मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया. इसी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत चेंज करके मैंने अपना ब्लॉक फेलियर का फॉर्मूला लिख दिया. इन द सेम वे अभी तक आपका जो भी था, पाइल वाज इन cohesive soil. Now if your pile is in cohesionless soil, so group capacity of your piles when it is in cohesionless soil. cohesionless मतलब आपका जो C है वो 0 है और soil जो है it could be a sandy soil. इसमें बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना. Your ultimate group capacity, that is QUG, is equal to your group efficiency of your pile multiplied by number of piles multiplied by एक पाइल का कैपेसिटी. अब आप सर बोलोगे कि ये फॉर्मूला कैसे याद रखें. दिस फॉर्मूला इज सेम एज द फॉर्मूला यू हैव लर्न फॉर ग्रुप एफिशिएंसी. ग्रुप एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, नीटा जी इक्वल टू टोटल पाइल ग्रुप का लोड कितना लेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाइल्स कितना है इनटू एक पाइल कितना लोड लेगा. इसको बस रीअरेंज किया है तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है. दैट्स इट. नाउ इन दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न रिमेंबर समथिंग, दैट इज अगर तुम्हारा पाइल ड्राइवन पाइल्स है, अगर आपका ड्राइवन पाइल है इन सैंड, देन efficiency you have to take it as 1, that is neta g is equal to 1. While if it is a board pile in sand,
then efficiency you have to take 2/3 to 1. You can take 2/3 value or 1 value. And apart from this, one thing which I have taught you, हम हर बार अल्टीमेट कैपेसिटी निकालते हैं. अगर आपको सेफ कैपेसिटी या फिर अलाउबल निकालना है इट इज इक्वल टू अल्टीमेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. दैट्स इट. Let's move to the sum now without wasting time. Should be able to, apply it there so that it becomes easy. किधर गया? Yeah. Yeah, this is the sum. The square group of 9 piles, and remember this group of pile wala sum is very important as university point of view. It's always coming in exam from the pile मतलब इस वाले chapter पे. And one more is there, one more topic जहाँ से sum ज़्यादा से ज़्यादा आता है. ठीक है. So you basically have a square group of piles of 9 piles is provided in a clay. The soil is a clay. I will just write the given quantities. The first thing I understand, it is a square pile. Square group of 9 piles. Square group of 9 piles, which is in clay. The diameter and the length of the pile were 30 centimeter and 9 meters. So I have my dia of my pile, which is equal to 30 centimeters, and I have my length of the pile, which is equal to 9 meters. The unconfined compressive strength of the clay is 90 kilonewton per meter square. I don't understand this. I will write as it is. My unconfined compressive strength is equal to 90 kilonewton per meter square up to the pile tip, and below the tip the undrained shear strength is, I don't understand this also what it is. I will just write how it is. Undrained shear strength is 50 kilonewton per meter square. The center to center pile spacing is 3 times of diameter. So I got my spacing is equal to 3 times of diameter. Apart from that, assuming addition factor, that is alpha, this is my addition, this is my spacing. Addition factor is 0.75, and the factor of safety that you have to consider, it is 2.5. What you have to calculate? You have to calculate the safe load capacity of the pipe. That is, you have to calculate Q safe. Okay. पहला चीज, this is how you should start with the sums also. पहला चीज, I got, it's a square group of 9 piles. I will try to draw it. As is a square group of 9 piles, that means it has 3 rows and 3 columns. Okay. Now it is in clay, पहले चीज. So as it is in clay, I have two formulas for it. One is when my group capacity based on individual pile failure, based on individual pile failure, and second is based on my block failure. Okay. Diameter दिया, which means D is given. Length दिया, which is L is given. I will write the formula for individual pile failure क्योंकि मुझे अभी formula याद है इसके लिए. So my QUG, that is ultimate load carrying capacity of a group of pile for an individual pile failure, is equal to number of piles multiplied by एक load. एक pile कितना load लेगा? That is ultimate load carrying capacity of a single pile. So this is equal to, let me write, yeah, N into my QU. I know my equation number 3, that is CUB NC into AB plus alpha CU into AS. Okay, let me try putting the things now.
Do I have number of piles? Yes. कितने number of piles है? अपने पास 9 piles है. I will put my number of piles, which is 9. I have 9 number of piles multiplied by CUB. What is CUB? If I am considering this as pile tip के अंदर जो cohesion है, that is your CUB. क्या क्वेश्चन पे दिया है? Let me read. The unconfined, I'm reading from this one. The unconfined compressive strength of the clay is 90 kilonewton per meter square up to the pile tip, and below the tip, the undrained shear strength is 50 kilonewton per meter square. इसका मतलब क्या दिया? यहां पे आपको undrained shear strength of soil is given. अगर आपको समझ नहीं आता ये क्या दिया है, I will explain this, because if I do it directly, then you might not understand that. I know my shear strength of my soil is equal to C plus sigma tan phi, right? Now, in this formula, my phi is how much? It's a clay soil. Phi is 0. ये पूरा 0 है, right? मुझे दिया है undrained shear strength of the soil is given. That is how much? 50. So 50 equal to Cu. Cu means undrained, cohesion, but shear strength दिया है, मैंने बराबर उसको ये कर दिया. तो आपको ये चीज याद रखना है, जब भी undrained shear strength दिया है clay soil पे, तो it is Cu. It is given as Cu. Don't do it directly. Do it in this way, so that you know the concepts very well. Any doubts you have, please let me know. I will be doing only this sum because I don't have time, I think. I have time. Okay. Any doubts? Anyone? Okay. Now, so I have CUB. ये end में है, तो it is equal to 50 multiplied by NC for a clay soil, it is 9 multiplied by AB pile tip का जो area है, it is always equal to pi by 4 into d square. D is 30 centimeter. I'm converting that into meter. It is 0.3 meters. So it is 0.3 square. Plus alpha, it is given in the question, it is 0.75. I will write it down. It is 0.75 multiplied by Cu. यहाँ का Cu चाहिए, ये मेरा पाइल है, यहाँ का Cu चाहिए. नेक्स्ट जो डेटा आपको दिया है, इट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेटा दिया है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो. अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब यू आर गिवन द डेटा ऑफ Qu इक्वल टू 90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां से आपको ओके, यहां से आपको Cu निकालना है, तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट Cu, सो Cu इक्वल टू Qu divided by 2, so it is 90 divided by 2, that is equal to 45. This is the concept. One second. Okay. So basically it would be